Today we'll start environment, ecology, and diversity. So first of all, what is an environment? So this is our surroundings, which includes both living component and the non-living component. Now, what is an ecology? It is an association of organisms, or you can say it is a study of association of the life forms and their environment. Full stop. It is the science which studies interaction between the life forms, and interaction of life forms with their environment. So what is ecology? It is a study of interactions between the life forms. वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं और उन लाइफ फॉर्म्स का अपने अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्शन होता है, that is called as ecology. First off, the term ecology was given by German biologist Ernst Haeckel in 1869. German biologist Ernst Haeckel in 1869. Now, the term ecology is derived from the German word, two German words, oikos plus logos. Oikos means home, logos means the study of. Oikos and logos. Oikos का मतलब home, logos means the study of. That means ecology is the study of organisms. Ecology means the study of organisms at their home. Now next term हमारे पास आती है इकोसिस्टम. सबने नाम सुना ही होगा. इकोसिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is the functional unit of ecology. Ecosystem is the functional unit of ecology, or you can say it is an entity of ecology or entity of ecology. अब अगर इसको समझना हो तो हम कैसे बात कर सकते हैं? से दिस इज लाइफ 1, दिस इज लाइफ 2. लाइफ 1 में से हमारे पास आ गए प्लांट्स, लाइफ 2 में हमारे पास आ गया इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स. लाइफ 1 plants, life 2 insects or the organisms, and then we have the non-living component 1 and the non-living component 2. Non-living component 1 में हमारा क्या आ जाएगा? एयर, वाटर,
नॉन लिविंग कंपोनेंट 2 में क्या आ जाएगा हमारे पास? सॉइल और लैंड। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है और इनका ऐसे क्या रिलेशन है? दिस इज कॉल्ड एज ecosystem. That is the interaction and interdependence of biotic and abiotic components. चलें जी. An ecosystem is a functional unit. Ecosystem is a functional unit composed of the biological community and integrated with its physical non-living environment. Integrated with its physical non-living environment through the flow of energy and nutrients. The term ecology was given by, anybody knows? No, sorry, the term ecosystem was given by anybody? A.G. Tansley in 1935. A.G. Tansley. So ecology was given by Haeckel and ecosystem was given by Tansley in 1935. Next is the term आती है हमारे पास very commonly used called as biosphere. Biosphere. It is a sum total of all ecosystems. It is a sum total of all ecosystems, or it is the largest ecosystem on the planet. Largest ecosystem on the planet, which includes lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. And the term biosphere was coined by a Russian scientist, Vladimir Vernadsky in 1920s. तो ये नाम याद रखने हैं किसने कौन सी टर्म को कॉइन किया था. तो इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय हैकेल, ecosystem was coined by Tansley, and the term biosphere was coined by Russian biologist Vladimir Vernadsky. ठीक हो गया जी. अब अलग से एक सेपरेट अब टर्म देंगे, बायोलॉजिकल कम्युनिटी. बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इसमें हम बात करेंगे कम्युनिटी क्या होती है
पॉपुलेशन क्या होती है और ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कम्युनिटी, पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म. What is community? Good. It is the group of different populations in an area. Group of different populations in an area. What is population? नहीं, उसमें स्पीशीज एक ही होगी या अलग अलग होंगी? वेरी गुड. It refers to the group of members of same species. Group of members of same species living in an area. And what is organism? It is an individual. Organism is an individual, either plant or animal. Plant or animal. तो ये आ गया different groups, members of the same species, and this is an individual. It can be plant or it can be any organism. ठीक हो गया जी? Now give heading characteristics of an ecosystem. इसको हम दो तरीके से स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम. सेकेंड इज फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम. स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम और फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम. स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इट हैज गॉट टू कंपोनेंट्स. वन इज एबायोटिक कंपोनेंट, सेकेंड इज बायोटिक कंपोनेंट. फंक्शंस की बात करेंगे तो वी हैव द फ्लो ऑफ एनर्जी, सेकेंड इज द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स. और वी कैन से स्ट्रक्चर की जगह वी कैन से कंपोनेंट्स. चले जी, यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो वी हैव फोर कंपोनेंट्स ऑन द होल ऑफ एन इकोसिस्टम. गिव हेडिंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. Abiotic, then we have autotrophs, then we have heterotrophs, and then we have decomposers. Abiotic, autotrophs, heterotrophs, decomposers. First, abiotic is very simple. That is the environment surrounding us. It is the
environment surrounding us. First, next is we are reading autotrophs. इसको अलग से लिखेंगे, autotrophs. This term is derived from the word trophos, meaning nourishment. The term word trophos meaning nourishment. Also known as the producers. Also known as the producers or the green plants or the green plants capable of producing their own food, capable of producing their own food by using the energy of sunlight, by using the energy of sunlight to make carbohydrates, to make carbohydrates from water and carbon dioxide, and is called as photosynthesis. Called as photosynthesis. अब आपको इसकी रिएक्शन पता ना? 6 CO2 plus 6 H2O. Catalyst is sunlight. C6 H12 O6 plus 6 O2. ये हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स. सेकेंड हेडिंग देंगे हम हेटेरोट्रॉफ्स. These depends on others. These depends on others, also known as consumers. Also known as consumers or phagotrophs. Phago, P-H-A-G-O, phagotrophs. First off, these are the animals. These are the animals which obtain their food. These are the animals which obtain their food by eating the plants, by eating the plants and other animals. Plants and other animals. To stop the heterotrophs in any ecosystem, the heterotroph in any ecosystem can be divided in different groups, can be divided in different groups depending upon their feeding habits. Depending upon their feeding habits. Like herbivores
कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और डिकम्पोजर सेपरेट हैं, याद रहे, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर और जो अभी लिखने जा रहा हूं, डेट्रीवोर्ड्स। तो डेट्रीवोर्ड्स आर पार्ट ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स एंड डिकम्पोजर्स आर द सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। वो इन्हीं को कहा जाता है सैप्रोफाइट्स। तो डिकम्पोजर्स आर आल्सो नोन एज सैप्रोफाइट। वो तो हो गया ना, अलग किस्म से आ जाएंगे पैरासाइट्स, वो इसी में आ जाएंगे। ठीक है जी, चले। नंबर 1, herbivores. They eat the green plants. They eat the green plants. Carnivores eat other animals. Omnivores, they eat both. Plants and animals. ब्रैकेट में लिख लो मी, है कि नहीं? गुड। डेट्रीवोर्स, इसको लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेट्रीवोर्स, these feed upon the detritus. Feed upon detritus. D-E-T-R-I-T-U-S, detritus, which refers to very small particles, which refers to very small particles of dead and decaying plants, very small particles of dead and decaying plants and animals. Dead and decaying plants and animal remains like earthworms, snails, dung flies, ठीक हो गया जी। Now next is decomposers. Decomposers, also known as saprotrophs. Also known as saprotrophs. Also known as osmotrophs. Saprotrophs or osmotrophs. These include bacteria and fungi. These include bacteria and fungi, which breaks down the organic matter, and changes waste and dead organisms into usable nutrients called as, and the process is called as, very good, humification. Called as humification.
भाई यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब देखो, एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का एक पूरा फ्लो चार्ट है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का एक फ्लो चार्ट है। ठीक हो गया? अब जैसे प्लांट्स एंड एनिमल, when they die, that becomes a dead matter. Process is called as degradation. Then this dead matter is converted into humus. Process is called as humification and is done by bacteria and fungi. Then this humus is further consumed by bacteria again, and the process is called as mineralization. And it becomes simple solutions simple solutions. Then these simple solutions are mixed up with water and then becomes complex solutions. And these complex solutions are once again taken up by the plants. When humus is consumed, nitrates are released in the soil and they are called as simple solutions, and they are mixed up with water, they become complex solutions, and once again these complex solutions are taken up by the roots of plants, and plants are eaten by animals, and the process goes on. This whole cycle is called as nutrient cycle. चलो जी, next, functions and processes of an ecosystem. Functions and processes of an ecosystem. देखेंगे, sun is the primary source of energy Sun is the primary source of energy for all ecosystems on Earth. Full stop. Of the incident solar radiations less than 50% of it is PAR, that is
photosynthetically active radiations. Photosynthetically active radiations. तो मतलब जितनी भी सन से एनर्जी आती है उसमें से लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस. इसको हम क्या कहा जाता है? PAR. फुल स्टॉप. द PAR इज डेजिग्नेटेड as the spectral range of solar radiations between 400 to 700 nanometer. Between 400 to 700 nanometers. Spectral range of solar radiations between 400 to 700 nanometers. That the photosynthetic organisms are able to use in the process of photosynthesis. तो मतलब जिस रेडिएशन को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, उसको हम क्या बोलते हैं? PAR, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. और वो पूरे स्पेक्ट्रल रेंज में वो कौन से रेडिएशंस हैं जिनकी वेवलेंथ इज बिटवीन 400 टू 700 नैनोमीटर्स. अब ऑफ दिस टोटल जो अवेलेबल है, just 2 to 10% is actually absorbed. 2 से 10% is actually absorbed. Full stop. The plants capture only 2 to 10% of PAR, 2 to 10% of PAR, and this small amount of energy sustains the entire living world. The living world. यहां तक क्लियर हो गया? देन अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी की. कितनी एब्जॉर्ब हुई, फिर वो बॉटम से ऊपर की तरफ कितनी जाती है. तो उसको बात करते हैं हम ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर. क्या बात करते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स. ये रहा हमारा ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4. अब पहले वाले में कौन आ जाएंगे? फोटोट्रॉफ्स और द ऑटोट्रॉफ्स. और जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में कौन आ जाएगा? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स.
अब इनको कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स। अब इनको कौन खाएगा? शाबाश। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इनको कौन खाएगा? टॉप कंज्यूमर्स। और यू कैन से द टॉप और टर्शरी। अब जितनी भी एनर्जी एट द ट्रॉफिक लेवल 1 में एब्जॉर्ब हुई है, यहां से just 10% of it is transferred to the trophic level 2. Just 10% is transferred to the trophic level 2. अब ट्रॉफिक लेवल 2 के लिए ये 10% जो ट्रॉफिक लेवल 1 से आई, फॉर दिस इट इज 100%। यस और नो? अब इस 100% का ट्रॉफिक लेवल 3 में कितना जाएगा? जस्ट 10%। ठीक हो गया? अब फॉर दिस ट्रॉफिक लेवल 3 दिस 10% इज 100%। अब यहां से ट्रॉफिक लेवल 4 पे कितना जाएगा? इसका 10%। So this is how energy is transferred from lower trophic levels to the higher trophic levels. इसको कहा जाता है 10% law. Who gave this? No. Avash, good. Lindemann. And this law was given by Mr. Lindemann. रेमंड लिंडमैन था, मैंने लिंडा नहीं याद रखा हुआ है। इजी है याद रखना इसको। चलें, लिखेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम begins with the trapping of solar energy, with the trapping of solar energy by the green plants, to photosynthesize. To photosynthesize. Full stop. In this process, solar energy gets converted into, chemical energy of organic compounds. Chemical energy of organic compounds. Full stop. The flow of energy is unidirectional. That is, it happens from the lower trophic level. To the higher trophic level, and cannot take place in reverse direction. Full stop. This flow is according to 10% law, which says that only 10% of energy at lower trophic level
can get transferred to the immediate next trophic level. First off, this 10% law was introduced by Lindemann in 1942. Lindemann in 1942. क्या तक क्लियर हो गया? अब इन ट्रॉफिक लेवल्स को हम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं. सर, अब ट्रॉफिक लेवल 1 पे बात करते हैं. वी हैव फाइटोप्लैंक्टन्स, we have grass, we have trees. Phytoplanktons are eaten by zooplanktons, grass by the grasshopper and the cow. Zooplanktons are eaten by the fishes, grasshoppers by the bird, cow by the wolf. एंड ऊपर आ गया आपका लायन और द मैन. ठीक हो गया?
food chain and food web. So what is food chain? Transformation and transfer of energy from one level of organisms to the other level. ठीक हो गया? ये दो किस्म की होती है, कौन कौन सी? एक हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, एक हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन. तो फर्स्ट हेडिंग देंगे आप फूड चेन. फूड चेन, it is a chain of transformation. Food chain, it is the chain of transformation and transfer of food energy, transformation and transfer of food energy in the ecosystem, from the one group of organisms to another group, one group of organisms to another group through a series of steps, or levels. And it is of two types: grazing food chain and detritus food chain. First heading, grazing food chain. In this, the first level starts with the plants as producers. First level starts with the plants as producers and ends with carnivores. As consumer at the last level. With herbivores at the intermediate level. तो शुरुआत होगा प्रोड्यूसर से, खत्म होगा लास्ट में कार्निवोर से, बीच में क्या रहेंगे? herbivores. First of all, there is a loss of energy at each level. There's a loss of energy at each level, which may be through respiration, or excretion. Excretion. Full stop. The levels involved ranges from 3 to 5. And energy is lost at each level. For example, sun, grass, rabbit, fox. Second example, sun, grass,
grasshopper, shrew, owl. Shrew is the mouse family. Owl. Third example, sun, phytoplanktons eaten by zooplanktons, eaten by fish, eaten by pelican or stork. ठीक हो गया? एक और लिख सकते हो, sun, plants, caterpillar, lizard, snake. So this is very simple one. Food chain. Next is detritus food chain. ये क्या थे हमारे? Detrivores, dead and decaying remains of plants and animals, eaten by earthworms, snails or the dung flies. अब इसका source of energy is directly from sun or indirectly from sun? Indirectly from sun. लिखेंगे. This type of food chain, goes from dead matter into the microorganisms. Dead matter into microorganisms and then to organisms feeding on the detritus. Then to organisms feeding on detritus, that is detrivores. भाई याद रहे, detrivores are different from decomposer. That is detrivores and their predators. Full stop. Such ecosystems are thus less dependent on direct sunlight or direct solar energy, but depends chiefly on the influx of organic matter produced in another system. Dead matter, जिसको हम बोलते हैं litter, eaten by earthworms, eaten by a rooster, eaten by hawk. Dead matter or litter, earthworms to rooster and then to the hawk. अब किसी भी इकोसिस्टम में
there are not these linear types of food chains, but rather there is intermingling of different food chains. ये इंटरमिंगल कर जाती है. जब इंटरमिंगल कर जाती है तो एक वेब बन जाता है. उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं. तो दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स अपॉन ईच अदर लीडिंग टू एन वेब दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब, जहां पर प्रे कम है या प्रे ज्यादा है और उस कंज्यूमर्स ज्यादा है, तो वो एक दूसरे की चीजें खा रहे हैं. देयर मिक्सिंग ऑफ और ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स लीडिंग टू अ फूड वेब. द नेक्स्ट इज द फूड वेब. when the feeding relationship when the feeding relationship in a natural ecosystem when a feeding relationship in a natural ecosystem becomes more complicated the food chain does not remain simple and linear. The food chain does not remain simple or linear. Rather, it is also complicated by several interconnected overlapping food chains. Interconnected overlapping food chains. First off, this happens when greater number of species feed on many kinds of prey. And such are called as food web. तो बेस पे क्या रहेगा हमारे पास? प्लांट्स, then we have here deer, frog, birds, then we have wolf या फॉक्स भी कर सकते हो. देन यहाँ क्या लिखें? और फॉक्स ऊपर कर देते हैं ना. हो गया, काफी है.
चलें जी, आपके लिए एक होमवर्क है। सम टर्म्स को ढूंढ के लाएंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट, स्टेट STATE, देन इकोटोन, देन एज इफेक्ट, एज EDGE, एज इफेक्ट, एज स्पीशीज, और लास्ट में इकोलॉजिकल नीश, NICHE, इकोलॉजिकल नीश। एज स्पीशीज, एज इफेक्ट, इकोटोन, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक हो गया? थैंक यू।